Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and today I will deliver its third lecture. So my dear students, let's quickly look at the student learning outcome for today. Today the students will be able to narrate the major events in the life of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh, like his date of birth, founder of Pakistan, view major contributions, and the date he died. So today we will discuss about the few major contributions of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So on that we will make a project, but before that let's quickly look at the Islamic perspective. So my dear students, the day when we will call every people with their imam. So my dear students, रोज़े हशर तमाम जो लोग हैं वो अपने इमाम के साथ, अपने लीडर के साथ जो है उनको पुकारा जाएगा, वो उनसे पहचानी जाएंगी. So हमारे लीडर जो हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं. He is a great leader. So my dear students, now let's move forward towards pre-reading question. So do you know why Resolution Day is being celebrated? कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहले तो ये सोचें. 23 मार्च को, 23 मार्च को. वेरी गुड. सो थ्रू आउट पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि इस दिन एक करारदाद मंजूर हुई थी 1940 में, 1940 में, जो कि कायदे आज़म का जिसमें बहुत बड़ा किरदार है. उन्होंने एक बड़ी रिमार्केबल स्पीच की थी वहाँ पर, जिससे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्रूव हुई थी. एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान दैट डे. और 1947 में जाके जो है तब पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था. सो वी विल मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दैट गिवन ऑन पेज नंबर 38. Project number 2. So the Lahore Resolution 1940 was the milestone in the creation of Pakistan. In this resolution, Muslims demanded a separate homeland. In this regard, search out the remarkable speech of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh and present it in your class. So my dear students, आपको Qaid-e-Azam की speech के बारे में search out करना है और उसकी क्या validity है, क्यों वो important थी, क्या points Qaid-e-Azam ने वहाँ दिए. We will talk about that. So throughout Pakistan on 23rd March we celebrate Resolution Day और Pakistan Day. So Qaid-e-Azam ने एक speech की थी, बहुत important speech थी, जिसका purpose क्या था. Let's have a look. Muslims wanted an independent country, place where they can live peacefully. So इस resolution का मकसद ये था, जो speech वहाँ पर की गई Qaid-e-Azam की तरफ से, उसका मकसद ये था कि मुसलमान जो हैं वो एक मुख्तलिफ कौम है from Hindus, and they need a separate homeland from themselves where they can practice their religion, their rights freely. So my dear students, historical background हम देख लेते हैं. Muslim League gathered in Minto Park, Lahore. The resolution was started on 23rd March. तो मिंटो पार्क में ये करारदाद मंजूर की गई थी. मुस्लिम लीग और तमाम जो लीडरान हैं वो वहाँ पर लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, और फिर जो है ये करारदाद को जो है वो मंजूर किया गया था. पहले पेश की गई और फिर मंजूर हुई. सो मोहम्मद अली जिन्ना ऑन 23rd March 1940 in his speech stated that we need separate nation because we want to develop to the fullest spiritual, cultural, economical, social and political life in our way. So my dear students, कायद-ए-आज़म का कहना ये था कि तमाम जो मुसलमान हैं, क्योंकि उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड, उनका रिलीजन, उनकी एथिक्स, हर चीज़ जो है वो हिंदू से डिफरेंट है. सो इफ़ दे आर सो मच डिफरेंट, दे आर पोल्स अपार्ट, सो दे नीड अ सेपरेट होमलैंड. सो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट था स्पीच का. सो अनदर थिंग जिस पे कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा फोकस करते थे वो था वर्क, वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म का कहना ये था कि आप सक्सीड ज़रूर करेंगे अगर आप मेहनत काम लगन के साथ करते जाएं. सो कायद-ए-आज़म का ये मोटो था और उन्होंने ऐसे ही किया. वो काम करते गए, मेहनत करते गए और पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया. So my dear students, 23rd March, Pakistan Resolution Day. The journey began on 23rd March 1940. The destiny was reached on 14th August 1947. So as I told you कि 23 मार्च जो थी ये आगाज़ था और इसका एंड कैसे हुआ. इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग कि 14 अगस्त 1947 को हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन डे सेलिब्रेशन पूरे पाकिस्तान में जो है वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाता है, झंडा लहराया जाता है, तमाम अहम बिल्डिंग्स के ऊपर
गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। इसके अलावा परेड जो है 23 मार्च की, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में होती है। और फौजी दस्ते जो हैं वो अपना नजराना और अकीदत जो है वो पेश करते हैं पाकिस्तान के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और उन तमाम कुर्बानियों को भी सराहा जाता है और उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है जो कि हमारे आबा और अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए पेश की थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप वन बाय वन इन तमाम पॉइंट्स को गैदर करके आप अपनी स्पीच को राइट डाउन करेंगे। सो आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। So it's time for practice. So you can download this colorful worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So on the first part of the worksheet, you will write down your class and your name, and then you can see this is मिंटो पार्क, जिसको आजकल मीनार पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मीनार पाकिस्तान जो है, यहाँ मीनार पाकिस्तान जो है ये उस जगह पर तामीर किया गया था जहाँ पर करारदाद जो है 23 मार्च की मंजूर की गई थी। सो हेयर आर सम पॉइंट्स गिवन हेयर। What you need to do is read them very carefully and then answer these questions. When was the Lahore Resolution passed? What was the purpose of the Lahore Resolution? Where is Lahore Resolution held? और ये कहाँ पर मुनक्किद हुई थी, कब पास हुई थी, क्या पर्पस था इसका, और ये कहाँ पर जो है वो मुनक्किद हुई थी. So these you have to answer these questions, then we will move forward. So for the evaluation, when was Pakistan Resolution passed? 23rd March 1940. Very good. What Quaid-e-Azam stated in his speech of Resolution Day? Quaid-e-Azam stated that Hindus and Muslims are two separate states, and Muslims must have a separate homeland to practice their religion, history, culture, and politics freely. So, my dear students, this was his narrative. Now we will move forward towards the homework. For homework, you will do this picture reading. See the picture and search out more about it and share with your class. So, my dear students, this is creation of Pakistan. ये उसकी एक old picture है, कैसे लोगों ने हिंदुस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी. So, आपको डेट लिखनी है पाकिस्तान के आज़ाद होने की, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का नाम लिखना है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है, आपको नेम ऑफ द कंट्री सजेस्टेड इन वो लिखना है, एंड नेम ऑफ द कंट्री सजेस्टेड बाय, और इसको किसने सजेस्ट किया था. सो यू हैव टू सर्च फॉर दीज points and then you have to write it in your book. So this is your homework. From here we will move forward towards the wrap up. Muslim needed a separate nation to live freely. Lahore Resolution was passed on 23rd March 1940. So my dear students, I hope now you know enough about 23rd March, और आप इसके से related speech भी deliver कर सकते हैं अपनी class में, अपनी assembly में. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.